Hello friends, I am Aastha and I welcome you back to my YouTube channel JRF Achievers. Although you all are worried about your NET exam, but then also I will suggest you that stay calm and just keep preparing for the exam. Success will be definitely in your hand. So अभी आप ये लोग मत सोचिए कि पेपर कब होगा कब नहीं होगा, बिकॉज ये चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेगी, आपको भी और साथ में आपकी प्रिपरेशन को भी. तो आप लोग आराम से पेशेंस हो रख के और अपना प्रिपरेशन को कॉन्टिन्यूस रखो. Or today in this video I would be discussing various literary movements and groups which are very important from exam point of view, so that for these minor topics you don't have to go here and there for the material. I know this topic is not that much difficult but can be time consuming because ये जो छोटे टॉपिक्स है जैसे मूवमेंट्स हुए या ग्रुप्स हुए, इनके लिए भी आपको इधर उधर पीडीएफ में से देखना पड़ेगा या फिर मटेरियल ढूंढना पड़ेगा कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है. सो मैंने क्या किया है इस वीडियो में सारी ऑलमोस्ट ऑल द इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट्स और जो ग्रुप्स हैं उनको इसमें मैंने ट्राई किया है कवर करने का. सो इन थ्रू दिस वीडियो आई ट्राई टू कवर ऑल द लिटरेरी मूवमेंट्स एंड ग्रुप एंड आई हैव डिवाइडेड दिस वीडियो इन 2 parts. So this is the first part. So watch this video with full focus till the end, and if you find it useful then please like and subscribe my channel. So let's start the video without wasting your time. So the first literary group is University WITS. So who are these people? कौन थे यूनिवर्सिटी विट्स? सो दीज आर पर्टिकुलरली आई हैव डिवाइडेड इनटू बुलेट पॉइंट्स. सो आप इन बुलेट पॉइंट्स को अच्छे से इनसे नोट्स भी बना सकते हैं इवन, बिकॉज ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स ही हैं. तो ये वो प्ले राइट्स थे हु आर राइटिंग एट द टाइम ऑफ लेट 16th century एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड. फॉर एग्जाम्पल जॉन लिली, थॉमस किड, थॉमस नेशे, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो. और इसमें एक्सेप्शन और दिया है मैंने थॉमस किड बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी एट एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, नाइदर कैम्ब्रिज नॉर ऑक्सफोर्ड. एंड क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश एंड ग्रीन, दे स्टडीड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी. Thomas Lodge and Green Peel, they study from Oxford University. And the first theatre was Elizabethan theatre in 1576. This is the extra information which I am giving to you. So the next is Lake poets. So who are the Lake poets? So they lived in the Lake district of London in 19th century, and imagination, intuition have to penetrate deeper in the essence of thing. So they basically connected themselves with the nature. They include Wordsworth, Coleridge, Southey, and also the term Lake poet was given by Francis Joffre. So आपको ये जो पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं फॉर बिकॉज काफ़ी बार नेट के एग्ज़ाम में ये पूछ लेते हैं कि किस बुक में दिया था या फिर किस मैगज़ीन में ये टर्म दी थी, किसने दी थी, एंड व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस लेक पोएट्स. Next is transcendental. So they were the Americans who started in writing 19th century in America, and these writers were non-conformist, and the Dial magazine was related to these people. Okay, and the main theme was nature as divine and human soul. जैसे for example Ralph Waldo Emerson. Okay, so his work was American Scholar. And second is Henry David Emerson, his work Walden, Walden, it was related to this movement. Walt Whitman का वर्क है Leaf of Grass. Margaret Fuller, Bronson Alcott, these all were transcendental. So you have to remember all the followers of this movement, क्योंकि कुछ भी पूछ लेते हैं आपको सारे फॉलोअर्स का नाम पता होना चाहिए, थीम पता होनी चाहिए, और यू शुड नो कि ये अमेरिकन मूवमेंट थी, एक तरीके से अमेरिकन ग्रुप था. डायल मैगजीन इससे रिलेटेड थी. नेक्स्ट इज प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड. So this was initiated by Dante Gabriel Rossetti, who was a painter as well as poet, and this is an artistic movement, not a literary movement. And main theme was this is medieval and
germ is a periodical which is related to pre-Raphaelite brotherhood, and its aim was to promote simplicity and naturalness in art. And we need to remember all the members of this group. And one more thing which I want to tell you, that Robert Buchanan, he did not like pre-Raphaelite poetry and also opposed this poetry in his work Fleshy School of Poetry. इसमें उसने अपोज किया था किनको, प्री रैफलाइट ब्रदरहुड को, रॉबर्ट ने. फिर एक था AC स्विनबर्न. ही वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ प्री रैफलाइट बट ही वॉज द फॉलोवर ऑफ सिमिलर मैनर ऑफ राइटिंग. सो आप लोगों को ये पॉइंट्स याद रखने हैं और यू कैन मेक अ नोट डाउन इन योर नोटबुक. One more thing, Robert Buchanan opposed William Morris, AC Swinburne and Dante Rossetti because they were the followers of pre-Raphaelite brotherhood. But Robert, he opposed this group and he accused them of immorality. And Fleshy School of Poetry article was published in a newspaper, Contemporary Review. So Rossetti ने इसको आर्टिकल को रिस्पोंड किया था बाय स्टील दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म में. सो ये थोड़ा मतलब आपको याद रखने वाली चीज़ें हैं कि किसने किस चीज़ को अपोज किया था, किसने उसको डिफेंड किया था. लाइक रॉबर्ट अपोजेस प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड पोइट्री बट रोजेटी रिस्पोंडेड टू हिज आर्टिकल विच वॉज इन अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड इन हिज स्टिल दी स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म. So the next is aestheticism. So it is a literary and artistic movement of 19th century, and they believe that art should not be mixed with social, political or moral teaching. I want to tell you about a quote that is arts for art's sake. It was originated by Victor Cousin and promoted by Gotthard, and you need to remember this because it is related to aestheticism. And the member which include are Oscar Wilde, AC Swinburne, D.G. Rossetti and Walter Peter. Next is naturalism. They were influenced by Darwin theory. They apply scientific ideas and principles like Darwin theory, and they believe that truth is found in natural law. And these stories in this movement is a character driven rather than the plot driven stories. And they include Emile Zola, Theodore Dreiser, Stephen Crane, Jack London. So these are the pioneer of this movement. One example is Human Beast by Emile Zola, and she was influenced by Darwin theory. Next is realism, and this movement was developed in France in mid 19th century and soon spread to England, Russia and US. सो इस जो ये वाला मूवमेंट है इसमें एवरीडे वर्ड यूज़ था और टिपिकल ऑथेंटिक सेटिंग, मतलब सब रिलेटेबल प्लॉट्स होते थे, जो कैरेक्टर्स थे वो भी मतलब रियलिस्टिक लाइफ से लिए गए थे. जैसे गुस्ताव फ्लॉबर्ट की मैडम बोवरी, इट वॉज द फर्स्ट मेजर वर्क टू फुली एम्ब्रेस रियलिस्टिक स्टाइल. जॉर्ज इलियट मिडलमार्च इज ऑल्सो अनदर एग्जाम्पल. And in America it was propounded by William Dean Howells. So this movement realism, they narrate their novels from objective unbiased perspective. ठीक है, तो इसके अंदर रियलिस्टिक एलिमेंट ज़्यादा होते थे. एंड दिस इंक्लूड गुस्ताव फ्लॉबर्ट, एमाइल जोला, लियो टोल्स्टॉय. सो दीज आर द मेंबर्स विच वर इन रियलिज्म, which were following realism. Next is beat movement. So the root of beat literary movement goes back to 1944, and their attitude and lifestyle were quite different from typical Americans. And Jack Kerouac, he coined this term beat movement. And one more thing, that their main theme was rejection of American values. as I have already told कि उनका जो लाइफस्टाइल और एटीट्यूड थे वो काफ़ी टिपिकल अमेरिकन से डिफरेंट था. तो ऑब्वियसली रिजेक्शन ऑफ अमेरिकन वैल्यूज़, और वो लोग रोड ट्रिप्स, सेक्सुअल अब्यूज़ और ड्रग अब्यूज़, ये सब ज़्यादा होता था इनकी पोइट्रीज़ में. और वो लोग फॉर्मलेस पोइट्री लिखते थे एंड सेक्सुअली एक्सप्लिसिट लैंग्वेज का यूज़ करते थे. एंड दीज मेंबर्स आर एलन गिन्सबर्ग, उसका वर्क था हाउल,
Jack Kerouac, On the Road, William S. Brown, Nick Lunch and Georgie Corso Boom. So ये आप लोगों को काफ़ी important movement है. So you need to remember all the important points related to this movement. Next is Harlem Renaissance. So this was the period between World War First and Great Depression. जब ब्लैक राइटर आर्टिस्ट फ्लोरिश हुए थे, उनको अपने हक के बारे में या अपने बारे में, अपने राइट्स के बारे में उन्होंने फाइट करने का ट्राई किया. सो लार्ज नंबर ऑफ अमेरिकन अफ्रीकन वर सब्जुगेटेड बाय द एरिस्टोक्रेट्स. So crisis and opportunity, these are the prose and poetry of Harlem Renaissance members, and these members include Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Aaron Douglas, Duke Ellington. So these are the important members of this group. And in 1920 and 1930s, American African, they start writing art and this, and after Civil War they got free and live in South and got many rights. So that is Harlem Renaissance. Even people were free from limitations. They can use jazz music was the one of the most important element of this Renaissance. So next is Irish Dramatic Renaissance. So this is a late 19th and early 20th century movement in Irish literature, and in order to revive old Irish drama जो कि काफ़ी कम होता जा रहा था, उसको रिवाइव करने के लिए. एंड W.B. Yeats वॉज द लीडर ऑफ दिस मूवमेंट. जैसे कि काफ़ी जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी इंग्लिश लिटरेचर की, वो दोबारा उनको मतलब दे वर फाउंडेड एंड री इशूड. सो ही वॉज W.B. Yeats was inspired by Gaelic movement. So what is Gaelic movement? It is about Irish mythologies, folk tales, इनके बारे में थे. So उनसे इंस्पायर होके इसने ये मूवमेंट का एस्टेब्लिश हुई है. In order to revive Irish mythology, he published a book called Celtic Twilight. ये एक बुक है that is also very important, Celtic Twilight, and he founded Irish National Theatre also, W.B. Yeats. And the members are Lady Georgie and George Moore, Sean O'Shea, W.B. Yeats. These are the most important figures of this movement. So the next is Imagism. This movement flourished in Britain and US somewhere between 1909 and 1917. So you should remember these dates also. This movement was influenced by Japanese works from haiku. ठीक है. और जो ये है जापानीज पोइट्री, ये 3 लाइन पोएम विद 17 सिलेबल्स होती है, जो मतलब कि उनको एक सिंपल इमेज के ऊपर फोकस करना था, इसलिए इस मूवमेंट का नाम है इमेजिज्म. और ऑल्सो एज अ पार्ट ऑफ मॉडर्निस्ट मूवमेंट अवे फ्रॉम सेंटिमेंटलिटी एंड मोरलाइजिंग टोन ऑफ 19th century विक्टोरियन पोइट्री से काफ़ी अलग होती थी. And the example are Ezra Pound in a station of metro, Amy Lowell, Hilda Doolittle Oriad, Richard Eldington. So these are the important imagist poets. Next is absurd. So you have already listened about this term, absurd novels, absurd literature. So this literary movement occurred during 1950s and 1980s, and this term was coined by Martin Esslin, who was a critic, and it is characterized by कैरेक्टर्स, रियलिस्टिक कैरेक्टर्स एंड सिचुएशन, जिसके अंदर हमें कुछ पता नहीं होता हम ये काम क्यों कर रहे हैं. आई विल एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल, दैट इज वेटिंग फॉर गोडोट बाय सैमुअल बेकेट. फॉर एग्जाम्पल, इन दैट नोवेल 2 people दे वर वेटिंग फॉर गॉड. सो हमें पता है कि गॉड उनके पास नहीं आएगा, देन ऑल्सो दे आर वेटिंग फॉर देम. सो देर इज़ नो क्लियर नोशन ऑफ टाइम और प्लेस कि ये एक्शन क्यों ले रहा है, क्यों ये हो रहा है, उनको कुछ भी आइडिया नहीं था. दे वर जस्ट डूइंग देयर वर्क एंड दे डोंट हैव एनी आइडिया कि गॉड होता भी है नहीं भी होता, उनके पास कोई आइडिया नहीं था. दैट इज़ एब्सर्डिटी, कि हमें कुछ पता ना हो, मतलब सेंसलेस वी कैन से. So both dialogue and incidents may appear to audiences completely nonsensical, even farcical. उसकी वजह से काफ़ी कॉमेडिक अफेक्ट भी हमें दिखता है इन नॉवेल्स में, इन वर्क्स में. जैसे एडवर्ड एल्बी का एक वर्क है जू स्टोरी, इजीन इनेस्को का एक वर्क है बार्ल्स पेरनो,
Harold Pinter, Homecoming, Caretaker, Birthday Party, these all are the example of absurdity. So the member include Samuel Beckett, Eugene Ionesco, Jean Genet, Harold Pinter, Albee. So these are the important pioneer of एब्सर्ड नॉवेल्स. तो होपफुली आप लोगों को ये सारी मूवमेंट्स और ग्रुप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. मैंने इनके प्रॉपर नोट्स आपको दिए हैं. जो पॉइंट्स हैं आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, उनको डेट्स वगैरह, उनके मेंबर्स आपको अच्छे से याद रखना है. सो आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा इसी वीडियो से. और एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी जिसमें और भी ज़्यादा ग्रुप्स होंगे, जिससे आपका पूरा लिटरेरी मूवमेंट और ग्रुप वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा. So thank you friends, and please like and subscribe my video if you like the video.